ଓ ପିଲାମାନେ, dear students, ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଅଫଲାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ର डिफरेंट इनफेक्शियस डिजीज विषय आउ इम्यून सिस्टम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन इम्यूनिटी विषय we have understood in details of the immune system, how it is actually working within human body, and we have understood what are the type of the organs which are responsible for immune system to maintain the immune system. We understood what is primary lymphoid organ, what is secondary lymphoid organ. We understood what is immunity and also have discussed about innate immunity. Here also I have mentioned the innate immunity and already discussed in my previous class conducted offline mode. Innate immunity is that immunity which is already developed before birth. Inborn immunity in short form is called as innate immunity. But here in today's class we will discuss about the acquired immunity. माने acquired माने जोड़ा कि acquire करा जीवो after birth or during lifetime of an individual. इटे कहला कौन कि acquired immunity develops during lifetime of an individual. माने ये acquired immunity टा birth time रे किंबा before birth develop हेई न थाउची. When an individual will encounter माने face माने सम्मुखीन हो गोटे पैथोजेन सहित pathogen माने disease causing microorganisms, then that immune system will be developed accordingly to fight with that microbe. गोटे जिमिति की तुम पाखे किसी एनर्जी अच्छी से एनर्जी तमें जो काफी तो किए अटैक कले ही तुमको तमें निजर से एनर्जीटा शो हम जड़े अटैक करनी तुम से एनर्जी शो हेनी खाली रे ये सब तो सहीटा हला एक्वायर्ड एनर्जी. सिमिति when a pathogen or disease causing microorganism or parasite will attack an individual during his or her own lifetime, then the immune system will develop a type of immune response. That immune response is called as immunity, and that immunity is actually called as acquired immunity. It is called as pathogen specific. Means what? जिमिति के एबे देखुनो कोरोना वायरस रो अटैक चली पेंडेमिक आगुरो कोरोना वायरस रो वेरिएंट जे कि कोविड-19 हो कि डेल्टा वेरिएंट हो कि ओमिक्रॉन व्हाटएवर वेरिएंट्स गुडा को जो कोरोना वायरस आसी सेटा आगुरो आसी नथिला हेले व्हेन the entire human society encounter with that corona variant, then few individuals have developed immune system or immunity against that
particular pathogen. Therefore, it is called as pathogen specific. And few other individuals were not able to respond against that particular pathogen. Therefore, they doesn't have that acquired immunity କାରଣ ତାଙ୍କର immune system weak ଅଛି ବୋଲି. So ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କି whenever a particular pathogen is actually attacking an human individual, then a particular type of immunity or immune response is developed, and that is called as acquired immunity. Therefore, it is also called as pathogen specific. Not present during birth. Yes, until unless one pathogen is not attacking to an individual, this type of acquired immunity will not be developed. Okay, and the immunity which is already developed at the time of birth is actually called as innate immunity, what we have already discussed. Develops during lifetime of an individual, we understood. Characterized by memory, yes. So once you have encountered with that pathogen, it does not mean that that pathogen will not attack you again. Mane coronavirus, for example, this is very best example in this part of acquired immunity. माने कोरोना वायरस रो जो वेरिएंट गुड़ाक आसिला ग्रेजुअली फर्स्ट वेव रे सेकेंड वेव रे थर्ड वेव रे चली कौन सी गोटे थर ही अटैक करिछि डिफरेंट इंडिविजुअल को नंबर ऑफ टाइम्स कोरोना वायरस एनकाउंटर और एवरी इंडिविजुअल एनकाउंटर विथ कोरोना वायरस. So whenever they will encounter with that coronavirus, they will develop immune response. It means response माने कौन है जिमिति कि तमे गोटे शत्रुटा को थरे देखिलो तने ही ताको शत्रु रे भाबियो द्वितीय थर देखिलो ताको शत्रु भलिया रे देखिबोनी जणे तमे मित्र जणे कि तमरो फ्रेंड कि तम रिलेटिव थरे मिसिलो ताको सहित थरे चिन्हलो कोन द्वितीय थर देखिले चिन्हिबोनी. So there should be a particular memory against that response, yes or no. से शत्रु हो कि मित्र हो तमरो मेमोरी थिले ही तमे ताको रिपीटेडली जेतेबे का सहित भेटुथिबो ताको से अनुसार रेस्पोंड करिवो. मित्र हितले मित्र भलिया रेस्पोंड करिवो शत्रु हितले शत्रु भलिया रेस्पोंड करिवो. यस और नो. So acquired immunity is actually acquired when a pathogen is actually encountered or a human encountered by the pathogen. ସେଥିପାଇଁ whenever the pathogen interact or attack a particular individual, then and there only the individual should also develop an immune response. So that should be a memory. Memory माने mental memory नहीं. तो ଗୋଟେ biological memory, ଗୋଟେ biochemical memory माने signaling type ର कहवा से सब cell signaling से सब जिनस त हमें प्लस लेवल रे पढिबानी माने जेतेबेले सेल पैथोजेन बोली चिन्हिबा दरकार सिम्बायोटिक बोली चिन्हिबा दरकार पैरासाइटिक बोली चिन्हिबा दरकार. जेतेबेले हमें लैक्टोबैसिलस दोचे ना लैक्टोबैसिलस इज सिम्बायोटिक टू आवर बॉडी आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो लैक्टोबैसिलस इज सिम्बायोटिक बोली इंटेस्टाइनल सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम रो सेल ताको मेमोराइज रखुची ना नहीं. तो से गोटे सेल सिग्नलिंग डेवलप होची है. से सिग्नलिंग कौन सर से गोटा सब आमे हायर स्टडीज रे पढिबा. अर्थ सिग्नलिंग दा होची सेल रो गोटे टाइप रो मेमोरी गोटे टाइप रो रिस्पांस. सिमिति जते बेले पैथोजेन अटैक करिले ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हबो. तो को टाइप रो पैथोजेन को टाइप रो रेस्पोंड इम्यून रेस्पोंड. तो से टाइप रो रेस्पोंड ही हेबा दरकार. So there should be a cellular memory, not mental memory.
मेमोरी सेलुलर मेमोरी सेल चिन्हुथिबा दरकार को सेल इम्यून सिस्टम रो सेल पढ़िबा आमे को सेल गुडाक बी सेल टी सेल दे शुड मेमोराइज दे शुड रिकॉग्नाइज दे शुड कैरेक्टराइज दे शुड रेस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर पैथोजन characterized by memory yes obviously हेले सर इनेट इम्यूनिटी रे मेमोरी मेमोरी कौन है से तो इनबॉर्न से तो बाय नेचर ही से बाय नेचर ही innate immunity will be almost all common to every individual but there is a variation in acquired immunity it is the most important thing you have to remember so first encounter प्रथम एनकाउंटर फर्स्ट टाइम जड़े पैथोजेन सहित एनकाउंटर गोटे गोटे नुआ टाइप रो पैथोजेन आसिला कोरोना वेरिएंट कोरोना रो जो कोविड-19 सहित एंटायर ह्यूमन सोसाइटी फर्स्ट टाइम ही इंटरैक्ट करथिला ये सब एनकाउंटर ही थिला तो फर्स्ट एनकाउंटर विथ पैथोजेन सेटा कोन करियो बॉडी प्रोड्यूस प्राइमरी रेस्पॉन्स प्रथम थर रेस्पॉन्स करिवो किंतु से रेस्पॉन्स एते स्ट्रांग हे नथिवो एते एते हाई इंटेंसिटी रहि नथिवो एते एनर्जेटिक हे नथिवो बिकॉज फर्स्ट टाइम फर्स्ट एनिमी फर्स्ट शत्रु केमिति शत्रु सहित सम्मुखीन हबो आमे जानिले फर्स्ट टाइम जदि जणे जाउथो क्रिकेट मैच खेलिया पे ताटी नर्वसनेस आसीबो से फर्स्ट टाइम क्रिकेट मैच टाइप रो जीवित यस और तो इन लो इंटेंसिटी बॉडी प्राइमरी रेस्पॉन्ड करिला but in low intensity less efficiently second encounter when that same pathogen will attack to the body either after one day or any other day second time encounter kala bole sitolu ko body respond secondary response will bajibo secondary immune response and that will be very strong immune response with high intensity because से already रिकॉग सीखी देला ना केमिति रेस्पोंड करबा कथा थरे गोटे क्रिकेट मैच खेली देला जणे द्वितीय थर गला जतळ खेलिया पे तार गोटे कॉन्फिडेंस आसीबो बिकॉज ही हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हाउ व्हाट इज द माइंडसेट हाउ टू हैंडल द माइंड एंड बॉडी एंड एंटायर बॉडी लैंग्वेज ऑन दैट पिच ऑफ क्रिकेट गेम यस और नो सेम थिंग बॉडी रो मध्य इम्यून सिस्टम रो सेल बी सेल हो टी सेल हो बी लिम्फोसाइट हो टी लिम्फोसाइट हो दे अंडरस्टूड इन द सेकंड टाइम इन द सेकंड एनकाउंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर पैथोजन दे अंडरस्टूड हाउ टू रेस्पॉन्ड माने कोन जार जार टिके वीक थिबो इम्यून सिस्टम से माने टिके वीकली रेस्पॉन्ड करिवे जार टिके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग थिबो से टिके स्ट्रांगली रेस्पॉन्ड करिवे किंतु गोटे जिंस मन रख फर्स्ट टाइम रो रेस्पॉन्स माने प्राइमरी रेस्पॉन्स अपेक्षा सेकेंडरी रेस्पॉन्स टिके स्ट्रांग हबो इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर so high intensity and this type of secondary immune response is actually called as anamnestic response okay the important thing to remember primary and secondary immune response carried out with B lymphocyte and T lymphocyte very important thing to remember B generally asichi bone marrow ru T generally asichi thymus रे आमे डिस्कशन करिचे word रो abbreviations गुडा आसीची सो आपको बी सेल भी कहि परिबा टी सेल भी कहि परिबा ए दीटा होची इंपोर्टेंट सेल बिले ए दीटा सेल को नहीं की दी टाइप रो सेल को नहीं की एक्चुअली एंटायर इम्यून रिस्पांस और इम्यून सिस्टम टा चलीछि ओके एथिरा और केते कैटेगराइजेशन अछि जोडा कि हायर स्टडीज रे पढिबा सो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी तो सब बेले हमें गोटे डिस्कशन करूचे कि इम्यूनिटी वाले एंटीबॉडी प्रोड्यूस हबो अगेंस्ट एंटीजन यस who is that cell who is responding किए हमरो किए सोल्जर हला किए हमरो सोल्जर हला बी सेल मेन सोल्जर जे कि तार अस्त्र शस्त्र कोन हला तार अस्त्र शस्त्र होची एंटीबॉडी जे अटैक कला अटैकिंग सोल्जर किए सी सम पैथोजन सेल तोड़े सेल तो सी को अस्त्र शस्त्र द्वारा अटैक कला को ये द्वारा ताको कहबा एंटीजन
से एंटीजेन आउ एंटीबॉडी रो रिएक्शन होची माने लॉक एंड की रूल टाइप रो गोटे लॉक गोटे कीटे जदि मिलगला आउ से की अदर को लॉक सहित अननेसेसरी रिएक्ट करबनी कि लॉक मध्य आउ को की सहित अननेसेसरी रिएक्ट करबनी एंटीबॉडी होची से लॉक भलिया रे एंटीजेन होची से की भलिया रे सो देख जदि आमे से कीटा को लॉक प्रोवाइड करबानी माने एंटीजेन को जदि एंटीबॉडी प्रोवाइड करबानी देन दैट की कौन हम मन इच्छा को लॉक भितर पशिकी गोलमाया कर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लॉक एंड की रूल भाया माने एंटीजेन एंटीबॉडी रिएक्शन जदि हेगला सुइटेबल एंटीजेन को सुइटेबल एंटीबॉडी इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड माने इम्यून रेस्पॉन्स इज एक्चुअली परफेक्टली गोइंग ऑन दिस इज वन थिंग टू अंडरस्टैंड सो जदि आमे बुझुचे कि जनकर इम्यूनिटी स्ट्रांग अच्छी जनकर गुड इम्यूनिटी अच्छी माने that individual is actually having a very perfect immune response, that is primary and secondary immune response. That means again we have to understand कि B cell or B lymphocyte is perfectly producing antibody against that particular antigen which were produced by that particular pathogen जोड़े कि वर्तमान पैथोजेन किए चलछि पैंडेमिक रे कोविड रो वेरियस वेरिएंट्स एबे थर्ड वेव रे आछि ओमिक्रॉन वेरिएंट तो इस व्हाटएवर तो सिमित रे मेन सेल है बी सेल और टी सेल रो काम कोन टी सेल इज एक्चुअली हेल्पिंग सेल हेल्पर सेल सी बी सेल को और बी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट और टी सेल कौन करछि प्रोवाइड हेल्प माने कोन सेलुलर मेकानिज्म रे किछटा असिस्टेंट रोल प्ले करछि B cell को help करुची for the production of antibodies. So this is all about the thing. So students, now we will understand. हमें पढ़िबा structure of antibody विषय structure of antibody जोड़ा कि important molecule which were actually produced by B cell antibody गुड़ा को B cell और B lymphocyte द्वारा produce होची antibody माने मु कहितली आगुरु मध्य antibody गुड़ा को होची protein complex molecules protein complex माने कोन polypeptide chain lot of polypeptide chain जिमदी के हार्मोन विषय पढ़थिले फर्स्ट ईयर रे जिमदी हार्मोन पढ़िथिले डिफरेंट प्रोटीन्स गुडा पढ़िथिले चैनल प्रोटीन पढ़िथिले इंसुलिन गुडा हार्मोन ग्लूकागॉन गुडा हार्मोन दीज आर कॉल्ड एज प्रोटीन्स सो आम पढ़िचे मध्य आगुरु मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिटेज रे कि प्रोटीन आर एक्चुअली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल्स जोटा कि एंजाइम रूप में से माने बहुत काम करती सेल भितर एंड दे आर आल्सो परफॉर्मिंग मोर एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स एंड ऑल अदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिविटी आल्सो परफॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स सो एठी जो पढुचे इम्यून सिस्टम रे आउथरे गोटे इंपोर्टेंट रोल आसिला एंटीबायोटिक रो सॉरी एंटीबॉडी गुडा का मध्य प्रोटीन तो प्रोटीन माने कौन प्रोटीन रो कॉम्प्लेक्स जो भितरे कि एक्चुअली चारिटा पॉलीपेप्टाइड चेन अच्छी चारिटा पॉलीपेप्टाइड चेन तो पॉलीपेप्टाइड कौन एमाइनो एसिड कौन ऑल दीज थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड इन द चैप्टर ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटीन सिंथेसिस हमें डिस्कशन कले तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन इन वन एंटीबॉडी ओके तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन भितरे 2 आर स्मॉल एंड लाइट स्मॉल छोटो चेन थिबे लाइट माने हल्का ओके एंड 2 आर लार्ज एंड हेवी लार्ज इन साइज हिथिबे और हेवी माने टिको ओजनिया हिथिबे तो से टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी द स्ट्रक्चर आई हैव गिवन इन माय प्रिंटेड नोट्स you will see how the Y-shaped antibody structure is actually there and long heavy chain are actually closer to each other
and to the long heavy chain of antibody, the light small chain are actually uh, attached. Okay, so these are nothing but the polypeptide chains only, and you can understand that four polypeptide chains are actually composing the entire structure of antibody. So types of antibody, if you see, main types, again there are subtypes or subcategorization of these antibodies are also available there in human body. But you will see the main type of antibody are actually five. Reiki, IG. What is IG actually? Antibody को मध्य कहउछंती immunoglobulin. Immunoglobulin से ग्लोबुलार स्ट्रक्चर रो प्रोटीन माने वाई शेप अछि से माने जदि हम लिनियर रे देखिबा नहले तो फंक्शन करछ ना से ग्लोबुलार शेप कारण ग्लोबुलार शेप जदि हबनी हमें देखो गोट जिंस when we will look into a human body structure केमिति देखा जाए गोटे परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर देखा जाए ह्यूमन बॉडी रो बट ह्यूमन बॉडी जो फंक्शन करे ना इट इज नॉट ऑल द टाइम मेंटेनिंग इट्स परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर केते डिफरेंट वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज ह्यूमन बॉडी मेंटेन करे देयरफॉर ह्यूमन बॉडी द्वारा मल्टीपल फंक्शन है पाइबो यस और नो तो सेम वे antibody no doubt y shaped structure देखा जाउची you can see in a notes structure printed notes structure रे देखि परिबो at last किंतु whenever the antibody will perform its work within human body mostly human ro blood रे सी आसे कारण blood is the main location in human body जोडी की actually pathogen रो attack सबुटो at first way. Okay, blood through रे ही infection टा spread out हुए all through the body. तो blood है गला prime location which is actually supplied all through the body parts. सबोले body part को ही ची. तो सिद्धि सबोले protection डाय पे boundary और defense system जो जॉगी ची कोड है हमारा border line रे जॉगी ची. सिमिति blood टा ही ची actually all through the body आड़े supply ही की अच्छी. यदि ब्लड रे ही प्रथम डिफेंस सिस्टम टा स्ट्रांग रहिबो जदि बोले एंटायर बॉडी को डिफेंस सिस्टम द इम्यून सिस्टम इज नथिंग बट कॉल्ड द डिफेंस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो सेठी डिफेंस सिस्टम रे प्राइम सोल्जर के हे गला एंटीबॉडी से गले एंटीबॉडी गुडा को हमको प्रोटेक्शन दोचंती डायरेक्टली तो व्हिच वर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल तो एडी कोन होची कि इम्यूनोग्लोबुलिन मध्ये कोइ पर इम्यूनो माने इम्यून सिस्टम को रेस्पोंड करूची बोले इम्यूनो हे गला ग्लोबुलिन टिके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रहे जोडी कि ड्यूरिंग इट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग इट्स फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी सेति पे इम्यूनोग्लोबुलिन बोली आप कहउचंदी आर शॉर्ट फॉर्म होची एब्रिविएशन होची आईजी IgG, IgA, IgM, IgE, IgD ये जो GAEM एवडा सब टिके रोमान लेटर आसी गामा शेप्ड ये अल्फा शेप्ड ये म्यू शेप्ड इमिति एप्सिलॉन शेप्ड से डेल्टा शेप्ड इमि सो अलग अलग टाइप रो ग्लोबुलर हेले मध्य से माने टिके अलग अलग टाइप रो आउरी अगेन वेराइटी मेंटेन करूचंती देखो दिस इज आमे इथे जस्ट प्राइमरी जिंस डिस्कशन करूचे हायर स्टडीज रे इम्यून सिस्टम को नहीं कि आउरी डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग अच्छी एठे आईजीजी रे मध्ये आउरी बहुत वेराइटीज अच्छी सब कैटेगरी अच्छी जोटा कि हमें स्टैंडर्ड 12th लेवल रे हमें पढुना है सो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आईजीजी खाली गोटे नहीं आउथरे सब कैटेगरी अच्छी तो आईजीजी आईजीए आईजीएम आईजीई आईजीडी इमिति main category or types of antibodies are there which were found and protecting our entire immune system within human body. The acquired immune system or acquired immune response is basically of two types. That is humoral or antibody mediated immune response जोटा कि डायरेक्टली बी सेल द्वारा परफॉर्म होची बी लिम्फोसाइट द्वारा परफॉर्म होची अब बी लिम्फोसाइट बेसिकली बोन मेरो डेवलप होची अब बोन मेरो कोट थाउची विदिन द cylindrical diameter of the bone which were found in our upper limb and higher upper limb lower limb
ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହେ ସେ ୱିଦିନ୍ ଦାଟ୍ ବୋନ୍ ମେରୋ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଏସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଜିନିଷ ଯାକ। ତ ସେ ବୋନ୍ ମେରୋରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ ବୋନ୍ ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହୁଏ। ସେ ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ଛାଡ଼ନ୍ତି କେଉଁଠିକି ବ୍ଲଡ଼କୁ। ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ର କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ସେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ଲାଜମାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହନ୍ତି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ। सो ह्यूमरल आउ थे आम तापर सेल मीडिएटेड जोटा सेल डायरेक्टली से काम करे किए टी सेल एथिरे टी सेल रो मेजर रोल अछि देखिबा विल सी दैट। सो ह्यूमरल एंटीबॉडी तमे जानो कि ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस रे एक्चुअली बी सेल रो मेजर रोल अछि आउ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस रे टी सेल रो मेजर रोल अछि। इट इज द इंपोर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर। ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस रे कौन हम एंटीबॉडी आर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा माने कौन चीज प्रोड्यूस कहले ना एंटीबॉडी गुड़ाक बी लिम्फोसाइट्स द्वारा प्रोड्यूस हम तापर आसो ब्लड स्ट्रीम को ब्लड प्लाज्मा रे से अवेलेबल हो तो इनक्लूड्स ब्लड प्लाज्मा कौन आरबीसी कौन डब्ल्यूबीसी कौन दीज आर द टॉपिक ऑफ फर्स्ट ईयर। सब जल्दी डिस्कशन करिया ब्लड कौन ब्लड प्लाज्मा कौन ब्लड ग्रुपिंग कौन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तमर जल्दी फंडामेंटल क्लियर नहीं यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोज टॉपिक्स। तो ब्लड प्लाज्मा कौन ये तो बुझे हेनी आउे आरबीसी कौन तो बुझे हेनी डब्ल्यूबीसी कौन बुझे हेनी ओके। सो ब्लड ग्रुपिंग कौन तुम जानी दरकार कारण ये आम जेनेटिक्स डिस्कसन करचे ब्लड ग्रुपिंग विषय आउ फर्स्ट ईयर रे ब्लड सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स ये डिस्कसन होती व्हाट इज लिम्फ व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा व्हाट इज सीरम व्हाट इज आरबीसी व्हाट इज WBC, what is platelets, all these things we had already discussed, dear students. So, fundamental thing are most important. जदि तमे गुड़ाक बुझीब नहीं आगु को टॉपिक गुड़ाक बुझीबाटा टिके कष्ट हो। ओके इनक्लूड्स कौन हला ए ह्यूमरल ये कौन आसो बी सेल्स गुड़ाक जनरली इंक्लूड थांती और टी सेल्स आर रहिबे नहीं कि रहिबे मेन रोल होची बी सेल रो बिकॉज बी सेल इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। टी सेल रो सर कौन रोल अरे वी हैव डिस्कस्ड नो कि टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स आर एक्चुअली हेल्पिंग बी सेल दीटा काम अछि आर आल्सो हेल्पिंग बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ओके सो टी सेल्स हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। नोट से देइची लेटर हेल्प्स अर्लियर मान लेटर बोले किए पर जो अच्छी टी सेल्स गुड़ाक बी सेल को हेल्प करती बोले तार अर्थ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस जोड़े कि डायरेक्ट टी सेल रो काम आसिला। टी सेल डायरेक्टली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करिवनी सी बी सेल को हेल्प करिवो ता सहित टी सेल आ कोन करिवो कि टी सेल ग्राफ्ट रिजेक्शन करिवो। ग्राफ्ट रिजेक्शन माने कोन गोटे एंटायर ऑर्गन टे धरनीय ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हम पढ़ले ना कार लिवर खराब हो गला कार किडनी खराब होला तो आउ जण को ठू से किडनी किबा लिवर को रिसीव करिवो आ गोटे इंडिविजुअल ह्यूमन इंडिविजुअल तो तार जेतो रिसीव करिवो ना कि फॉर एग्जांपल पर्सन ह्यूमन ए इज एक्चुअली रिसीविंग द लिवर गोटे ऑर्गन टे तार ट्रांसप्लांटेशन हो। ट्रांसप्लांटेशन वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स जो ऑर्गन फेल्योर हो जाए ना एंटायर ऑर्गन फेल्योर हो जाए तो ऑर्गन रो किछि रिपेयरिंग हबनी कौन सी ट्रीटमेंट हबनी इन दैट केस वी नीड टू रिप्लेस वी नीड टू रिमूव दैट एंटायर ऑर्गन आमे से एंटायर ऑर्गन टाको रिमूव कर दवा आउ जे माने एबे धरने किडनी जनकर खराब दीटा पेयर ऑफ किडनी था तो किडनी खराब हो गला तो से आई डोनेट करछन लोक आई तो से कोन आउ जनकर ऑर्गन टाको आमे नै कि यूज रे लगेबा फॉर आवर फर्दर लाइफ तो ताको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बोली कहछन। आखि केस हो स्किन मधे ट्रांसप्लांटेशन होची तो स्किन केस रे आमे अदर पर्सन तो स्किन नोने निजर ही स्किन को नै कि एनिमल सेल कल्चर होची ताकू ग्रो करा होची सी एसो कथा बडा को मुटिके डिस्कशन करिछि क्लास रे तो यू माइट हैव सम बेसिक आइडिया किंतु एगुडा को कोन होची सर किमिति ट्रांसप्लांटेशन होची कोना आंदी एनिमल सेल कल्चर मु कहि पारि बिले आई हैव दैट आइडिया
किंतु सेटा आम सिलेबस टॉपिक नहीं यदि तथापि आम ओवरऑल डिस्कशन कला को बहुत किसी जिन चर्चा करुचे तो छाड़ एनीवे सो ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट हम गोटे पर्सन ए ह्यूमन ए इज एक्चुअली रिसीविंग सम ऑर्गन माने धर्म किडनी जड़े रिसीव करला ये इंपोर्टेंट जिनस मो माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर पढ़ला बेलू कही कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट को यूज करा जाए अर्थ कौन बेले बेले कौन से ऑर्गन रे अच्छी कौन सेल टिश्यू सिस्टम अच्छी माने सेल अच्छी से सेल गुड़ाक बेले बेले कौन गोटे फॉरेन माने गोटे गोटे पैथोजेनिक गोटे गोटे अननोन फॉरेन सेल भाया बिहेव करिए माने सेल को रेस्पॉन्ड करेंगे जे जे कि रिसीविंग धरने पर्सन ह्यूमन ए इज एक्चुअली रिसीविंग दैट ऑर्गन माने ह्यूमन ए रो सेल गुड़ाक जो ऑर्गन टाको रिसीव करने को जाउथिबे से ऑर्गन रो सेल गुड़ाक दे विल रिकॉग्नाइज एज दोज सेल्स आर एक्चुअली पैथोजेन so in that case a negative immune response will be developed and to suppress negative immune response ta kimi develop hela yes ताको ही कहउछथि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस सेटा कहा द्वारा डेवलप हला टी सेल द्वारा डेवलप हला ले एटा भलो हला ना खराब हला नहीं भलो ही होछि कारण कोडे टिके जदि से ऑर्गन रे डैमेज थिबो कि ऑर्गन रे एनी कोन प्रॉब्लम थिबो सेथि पई तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस और सो स्टूडेंट्स सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स रे आमे देखिले कि एटा जनरली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन केस रे हुए ग्राफ्ट रिजेक्शन माने कौन एंटायर गोटे फॉरेन माने बाहर रो गोटे ऑर्गन और टिश्यू सिस्टम को जोटा कि ट्रांसप्लांटेड हवा को जाउची ताकू से रिजेक्ट करि पारे जदी नेगेटिव इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप हला तो कहीं डेवलप हम इफ एट ऑल बेले बेले बॉडी ताकू रेस्पॉन्ड करि पारेनी गोटे ऑर्गन टाकू तो से केस रे जदि ऑर्गन रे किछि भी डिफेक्ट थिबो जो ऑर्गन को आमे ट्रांसप्लांट करूचे सेथरे मदो किछि डिफेक्ट थाई पारे किमा किछि इन्फेक्शन थाई पारे तो से केस रे से बहुत सेंसिटिव वे रे सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स ताकू माने रेस्पॉन्ड करिवो तो सो इन दैट केस जदि माइनर ऑर्गन रे किछि प्रॉब्लम थिबो जोडा कि आमे ट्रांसप्लांट करिया को जाउचे माइनर प्रॉब्लम थिबो व्हिच इज कंपेयर्ड टू आवर ऑर्गन जदि निजर इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल रो ऑर्गन ता तार डैमेज हेछि बोल ता उड जगह रु आ जन गोटो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करूचे तो निजर ऑर्गन टू तो फार बेटर थिबो तो से केस रे आमे से ऑर्गन टा को ट्रांसप्लांट करले किछि असुविधा नै बट याडे सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्ड ताकू नेगेटिवली रेस्पॉन्ड करथिबो तो इन दैट केस कौन करवा कि सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स जोगु से आमे जदि से ऑर्गन टाको रिसीव करिवार अच्छी तो से केस रे आमे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज करवा सेटा ही वर्तमान टॉपिक रो एठी डिस्कशन तो इट कॉजेस ग्राफ्ट रिजेक्शन करछि माने एंटायर ये को रिजेक्ट करि परिबो बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ माने पढिले कि निजर सेल आउ गोटे फॉरेन बाहर रो सेल टाकू से डिफरेंशिएट करि परुथिबो कि सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स जोगो तो टिश्यू मैचिंग ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग जिते आम स्किन ट्रांसप्लांटेशन करुचे कि एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करुचे से गोटे सेल रो सिमिलारिटी देखा दरकार कि वेरी जेनेटिक डिसिमिलारिटी ना तो सेल टू सेल भितर तो ब्लड ग्रुप मैचिंग बिना ब्लड ग्रुप मैचिंग रे आमे तो ब्लड डोनेट भी करी जने रिसीव करि परिबोनी जनकर बी पॉजिटिव हेतियो तो बी पॉजिटिव ही रिसीव करिवो बी नेगेटिव हेतियो तो बी नेगेटिव रिसीव करिवो एनी ब्लड ग्रुप मैचिंग सेटा भी हेतिया दरकार नहले जदि अलगा किछि ब्लड ग्रुप जने रिसीव करिवो तो से केस रे सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप हबो तो सेटा होछि मोस्ट इंपोर्टेंट तो जदि आमे ब्लड ग्रुप को रिसीव करूचे सेम ब्लड ग्रुप हेतिबार अछि तो से केस रे आमे ब्लड एसो मैचिंग करे एसेंशियल बिफोर एनी ग्राफ्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवा आगु मध्य आमे टिश्यूर मैचिंग करवा दरकार स्किन ट्रांसप्लांटेशन हो कि एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो टिश्यूर मैचिंग करवा दरकार ना तो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स ताकू रिजेक्ट करदेव ताकू ही ग्राफ्ट रिजेक्शन बोली कहा जाए एंड इन दैट केस इम्यून सप्रेसिव सप्रेसेंट इज नीडेड
नीडेड माने कौन को केस रे टेम्पोरेरीली नीडेड होता है नहल तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट गुड़ाक नेबाक पड़ पारे जदि को केस रे मेजर केस रे होता है कारण बेले बेले जदि फॉरेन किसी गोटे ऑर्गन टाको ट्रांसप्लांट करले धरनीय किडनी जन ट्रांसप्लांट करला आउ से किडनीटा जार किडनी से ट्रांसप्लांट करला ता सहित से इंडिविजुअल रोटे जेनेटिक डिसिमिलारिटी बेसी अच्छी तो से केस रे तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट तो बहुत नेବାକୁ पड़ो अदरवाइज इट इज़ वेरी कॉमन कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट तो नेबाकू ही पड़े को केस रे टेम्पोरेरीली आउ को केस रे लाइफ लॉन्ग सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक आम नेक्स्ट टॉपिक रे आउ डिस्कसन करवा इम्यूनाइजेशन विषय रे वैक्सीनेशन विषय रे आउ रेस्ट ऑफ द टॉपिक विषय रे I hope you have understood. If you have any doubt, just go through the videos repeatedly and follow the notes so that you can understand the topic easily. Thank you very much.